Wait a second. सर करंटली अरे यार भाड़ में जाए इंग्लिश। तो मैं अभी ना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहा हूँ। मैंने मेमोरी मैनेजमेंट में कॉन्टिगस नॉन कॉन्टिगस पढ़ चुका है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अरे यार लाइव स्ट्रीम करना मुश्किल हो जाता है जब मैं पढ़ रहा था, पर जब भी मौका मिलेगा मैं लाइव आ जाया करूँगा। अभी तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाता हूँ टॉपिक जो मैंने पढ़ रखा है। सो मैं आपको अभी रिसेंटली पेजिंग एंड मल्टी लेवल पेजिंग मैंने पढ़ा है। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम explaining you paging and what I've studied in paging. So if you all know, paging have a issue of large page table size. So paging में जो ये इशू होता है लार्ज पेज टेबल का, इसको सॉल्व करने के लिए इसके ड्रॉबैक है ये जो लार्ज पेज टेबल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी कम है और हमें मेमोरी मैनेज करना है, तो इस लार्ज पेज टेबल से हमारा काम नहीं होगा। हमारी मेमोरी ऑलरेडी स्मॉल है और हमको लार्ज पेज टेबल नहीं चाहिए। पेज टेबल क्या होता है? जब हमारा सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा होता है, वर्चुअल एड्रेस, उसे वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। सो उस वर्चुअल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस देयर इज अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड व्हेन यू गो टू दैट वर्चुअल एड्रेस you'll उस वर्चुअल एड्रेस में फ्रेम क्या होता है? हमारी जो एक्चुअल एड्रेस स्पेस है, हमारी जो रियल मेमोरी स्पेस है, उसमें कहाँ कौन से फ्रेम में हमारी एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम या फिर रिसोर्स स्टोर्ड है, वो आपको इस फ्रेम में, मतलब इस पेज वर्चुअल वर्चुअल क्या था ये? वर्चुअल एड्रेस स्पेस VAS, ये आपके वर्चुअल एड्रेस स्पेस में स्टोर रहता है कौन से फ्रेम में आपका डेटा पड़ा है। तो जब आपका सीपीयू जनरेट करता है आपका वर्चुअल एड्रेस एंड आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस के फ्रेम में जा रहे होते हैं हम, तो उस वक़्त जो ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस बना है, इसको हम कहते हैं पेज टेबल। ये जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस में जहाँ फ्रेम्स स्टोर्ड हैं, हमारे सारे फ्रेम नंबर स्टोर्ड है कि कौन से फ्रेम में कौन-सा प्रोसेस पड़ा है, वो जो स्टोर होता है, उसे हम पेज टेबल कहते हैं। तो हमारे पेज टेबल बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है एज़ प्रोग्राम इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पर प्रोग्राम एक पेज टेबल बहुत बड़ा हो जाता है। सोचो मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे तो हमारा पेज टेबल साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं। पहला तो सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम पेज साइज़ को इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ करते हैं, पेज साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं, पेज साइज़। अगर हम पेज साइज़ डिक्रीज़ कर देंगे तो पेज टेबल तो बड़ी हो जाएगी, तो पेज टेबल बड़ी हो गई। अगर पेज टेबल बड़ी हो गई, तो पेज टेबल साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। और अगर हम पेज साइज़ इंक्रीज़ कर दें, पेज साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होगा? पेज साइज़ इंक्रीज़ करने से हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स कम हो जाएँगे। नंबर ऑफ फ्रेम्स कम हो जाएँगे तो पेज टेबल साइज़ भी कम हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम पेज साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस कैसे बढ़ जाएँगे? अब हमारे पास लार्ज पेज साइज़। तो अगर हमारे पास कोई छोटा मेबी थो 2-3 बिट्स का कोई एड्रेस है वो बच गया, तो वो हमें छोटे स्पेस में स्टोर करना पड़ेगा और बाकी सारा स्टोरेज हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए लार्ज पेज साइज़ हम रखेंगे तो उससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। पर ये भी एक सॉल्यूशन है, पोटेंशियल सॉल्यूशन, अगर आपको पता है कि आपके आपके फ्रेम्स के साइज़ ऑलरेडी बिग है, आप लार्ज पेज साइज़ ले सकते हैं। हर सॉल्यूशन का कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। यू हैव टू चूज़ ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू योर केस। देन वन मोर वे टू एक्चुअली deal with large page table sizes, multi-level paging. So what's happened in multi-level paging is
you already know that there's a page table and how page table is created. And then when you take this page table and you actually apply paging to this page table itself, you apply paging to this physical memory, then you apply paging to the virtual memory, this virtual address space page table itself. So when you do paging of the page table, that's multi-level paging. Now how to do paging of the page table? So here is example. You can, okay, I have to explain from the starting, bro. I have to explain from the starting everything, memory and everything. So okay, let it be. We'll do that later. So first, I'll explain you what's multi-level paging and how to do paging of the page table itself. So to do paging of the page table itself, just imagine you have a logical address space of 4 GB. Okay, I have to do a reverse thing. I hope somebody can record me from the back. This might not work. Hmm. Okay, let it be. You guys should. This is the beginning, bro. Okay, logical address space is 4. Okay, wait, let it be. So we have a logical address space of 4 GB. We have page size of 4 KB. And so what will be the number of pages? First, what's 4 GB? What's 4? 2 power 2. What's giga? Is 2 power 30. And what's 4 KB? It's 2 power 2 and 2 power 10. Kilo is 2 power 10. Okay. So how many number of pages? 2 power 32, which is 32, 2 power 32 divided by 2 power 12. It's 2 power 20. Number of pages we have is 2 power 20 pages. Okay. So number of pages we have is 2 power 20 here. And our logical address, what will be the logical address? First we need to know, get the page now. So we need 20 bits to get, to get the address of the page. So we need 20 bit to get the address of the page. And this offset here, offset means internal, internally how many bits is required to uh, map a particular uh, process. So I'll need 12 bits. How this 12 came? Because each page table is 4 KB. So I need 12 bits to actually map the page itself. Now I have my logical address as 20 bits for the page address and 12 bits for the offset. So what I'll do in multi-level paging, I'll break this 20 into two parts. Like this two breaking it two parts. Why two parts? I'm currently explaining you like two-level paging. Multi-level will just first we'll understand how two-level works, then we'll understand how three-level works, then simply you can generalize it for n levels. So we have a logical address for two levels, and two level will break this into two parts, which 10 bits. So just imagine 2 power 10t is divided by 2 power 10. So what's answer is 2 power 10 is the answer, which means 1024. So now this page table itself is divided into 1024 parts. The page table, like listen this very carefully. This page table I have, okay, this E is the size, page size, whatever it is. So we have 1024 division. 2 power 20 is divided into 1024 parts. What I mean by that, it's there are now, first it had 2 power 20 pages. Okay. Now I'm dividing this 2 power 20 by 1024, 2 power 10, because that's how I divided. So now we have 2 power 10 more pages. More pages means the new table will have 1024 entries. First we had 2 power 20 pages in this page table, original page table. Now I created a new page table, pt dash, with divided by, like I divided this now, so I divided that by 2 power 10. So I now have 2 power 10, which is equals to 1024. Now I have a new page of 1024. Like, how can I explain you this? Is first, let's get to the original page table. This is the original page table. I divided it into 1024 parts. Okay, 1024 parts means this p dash 0, p dash 1, p dash 2, p dash 3, and up to p dash 1023. So there are divisions here. Okay, division. I divided the page table itself into pages. So this was my page table. I divided the page table itself into pages.
Now, how many pages do I have? I have 1024 pages. Each page. Now, let's zoom into this page itself. Like zoom. I'm zooming in the first page, P dash 0. Now, how many entries will be there in P dash 0? In P dash 0 itself, P dash 0 itself will have 1024 entries. What will be those 1024 entries? That will be the original page, P0, P1, P2, P3, P4, the original pages. This is P dash, okay? This will be the original page. So the original pages are saved into P0, P1, P2, P3 here. Okay. Now, you must be wondering what's the advantage here?